Today we are going to do BHIC-101 assignment. I will show you all how to write your assignment. So it is BHIC-101 History of India. The question is assignment 1 is you have to answer the questions in 500 words each. और आपको एक्सप्लेन करना है लिटरेरी सोर्सेज के बारे में जो हेल्प किया रिकन्स्ट्रक्शन होने में एंशिएंट हिस्ट्री को. उसमें आपको स्पेशल रेफरेंस देना है जैनिज़्म और बुद्धिज़्म लिटरेचर को. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पैलियोलिथिक. आप पैलियोलिथिक से क्या समझते हैं आप उसके बारे में लिखिए और एक ऐसे लिखिए पैलियोलिथिक आर्ट एंड प्रैक्टिसेस के बारे में. असाइनमेंट 2 में है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 250 वर्ड्स ईच. आपको 250 वर्ड्स ईच में आपको आंसर करना है जिसमें आपको साइंस टेक्नोलॉजी जो एंशिएंट इंडिया में था उसके बारे में बताना है, मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में भी बताना है. फिर 5th क्वेश्चन आ जाता है राइट अ नोट ऑफ द ग्रोथ एंड प्रिंसिपल एंड एक्सपेंशंस ऑफ बुद्धिज़्म इन एंशिएंट इंडिया. क्या उनके प्रिंसिपल्स से कैसे ग्रोथ हुआ बुद्धिज़्म का एंशिएंट इंडिया में वो लिखना. असाइनमेंट 3 में आ जाइए. ये बहुत शॉर्ट में रहता है और ये 6 मार्क्स ईच है जिसमें आपको 100 वर्ड्स में लिखना है. मीन्स 1 पेज इज़ मोर देन एनफ. गैंगेटिक नॉर्थ इंडिया, हड़प्पन क्राफ्ट, प्री वैदिक रिलीजन, इंडियन फिलोसफी एंड इट्स एनवायरमेंट वर्जन एंड सप्तांग थ्योरी. असाइनमेंट 1 में पहला आंसर द फॉलोइंग इन अबाउट 500 वर्ड्स ईच. एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ लिटरेरी सोर्सेज इन द रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया विद अ स्पेशल रेफरेंस टू जैन एंड बुद्धिस्ट लिटरेचर. तो ये क्वेश्चन है. सबसे पहले आप जैनिज़्म के बारे में लिखिए कि जैनिज़्म क्या है. जैनिज़्म इज़ एन एंशिएंट रिलीजन दैट इज़ रूटेड इन फिलोसफी दैट टीचेस द वे ऑफ लिबरेशन एंड पाथ ऑफ स्पिरिचुअल प्योरिटी एंड एनलाइटनमेंट. आपको इंट्रोडक्शन देना होगा पहले कि जैनिज़्म क्या है और उसके बाद आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना होगा बुद्धिज़्म क्या है, कब जैनिज़्म बुद्धिज़्म आया. उसके बाद जैन लिटरेचर उसके सोर्सेज के बारे में लिखना है. तो सबसे पहले लिटरेरी सोर्सेज के बारे में आप लिखिएगा कि मॉन्क्स ने जितने भी लिटरेरी सोर्सेज लिखे जैसे कि प्रकृति, अर्धमगधी, लैंग्वेजेस में, ये सब चीज़ का आप मेंशन कीजिए. देखते जाइए आप स्लाइड्स को एंड यू कैन आप स्क्रीनशॉट्स लेते जाइए और आप ऐसे ही लिख सकते हैं. जैना अंगास के बारे में है. श्वेतांबरा, दिगंबरा क्या था, 2 सेक्ट्स था, उसके बारे में आप मेंशन कीजिए. आप स्क्रीनशॉट्स लेते जाइए. एक बार इस असाइनमेंट को अच्छे से पढ़िए और ऐसे ही आप अपना असाइनमेंट बनाएंगे. आई होप आप स्क्रीनशॉट्स लेते जा रहे हैं स्लाइड्स के. जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट्स. बुद्धिस्ट लिटरेरी सोर्सेज के बारे में फिर
सूत पिटाका जो है डिवाइड किए गए हैं फॉलोइंग सेक्शंस में, उसको भी आप मेंशन कीजिए. You have to make your assignment creative. You can write about Vinay Pitaka. Write about Jataka stories. Divvamsa, Mahavamsa, Buddha Charitra. These are very important sources which you should mention in your answer writing. एक कंक्लूजन, एक अच्छा सा कंक्लूजन दीजिए आप, जैसे कि दस जैनिज्म एंड बुद्धिज्म अरोज टू सूट द नीड्स ऑफ द चेंजिंग सोसाइटी. दोनों आया क्यों था? क्योंकि सोसाइटी का नीड था उस समय. पेट्रोनाइज्ड बाय इमर्जिंग क्लासेस एंड लेफ्ट एन इंडेलिबल मार्क ऑन इंडियन कल्चर. These religions are also found their influences in the neighboring countries and help India expand its footprint in the religion, paving way for culture connect to the this thing. Now we are in the second question. What do you understand by Paleolithic? Write an essay on Paleolithic art and practices. Paleolithic के बारे में क्या समझते हैं और उसके आर्ट एंड प्रैक्टिसेस के बारे में कैसे लिखें. पहले तो आप डिफाइन कीजिए एक पैलियोलिथिक पीरियड होता क्या है, कब आया और कहाँ से कहाँ इसका time frame. Paleolithic period is an ancient culture stage of human technological development categorized by the certain and uses of the rudimentary chipped stone tools. This Paleolithic period was also categorized by the manufacture of small sculptures, example carved stone statues of women, clay figurines of animal and other bone and ivory carvings and paintings, which were designed on the cave and the walls. फिर पैलियोलिथिक कितने फेजेस में डिवाइडेड है? फर्स्ट फेज, सेकेंड एंड थर्ड फेज. लोअर पैलियोलिथिक आर्ट एंड प्रैक्टिसेस के बारे में आप पहले लिखिए. द लोअर पैलियोलिथिक और द अर्ली स्टोन एज कवर्स द ग्रेटर पार्ट ऑफ द आइस एज. स्क्रीनशॉट्स लेते जाइए. लोअर पैलियोलिथिक एजेस के बारे में आपको अच्छे से डिफाइन करना है, क्या क्या है, कहाँ उसके साइट्स फाउंड हुए हैं. आंध्र प्रदेश में, भीमबेटका में. फिर आता है मिडिल पैलियोलिथिक एज, उसके आर्ट एंड प्रैक्टिसेस को आपको बताना है. द बेलन वैली इन यूपी, ये सब एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे फाउंड हुए हैं मिडिल पैलियोलिथिक एज के साइट्स. देन कम्स द अपर पैलियोलिथिक एज
its art and practices, you have to mention it. उसके केव शेल्टर्स कहाँ फाउंड हुए हैं अपर पैलियोलिथिक के, वो आप मेंशन कीजिए. क्या क्या फाउंड हुए, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे, कंपैरेटिव एनालिसिस कीजिए. जो अब मिडिल और लोअर में फाउंड हुए वो अपर से कैसे डिफरेंट है. I hope you are taking the screenshots. क्या क्या डिस्कवरी वहाँ पर पैलियोलिथिक में, जैसे कि रबर बिल्ट इन सर्कुलर फॉर्म. फिर आप एक कंक्लूजन दे दीजिए दैट द पैलियोलिथिक एज लास्टेड फॉर this to this year, and what were the tools, what were the difference between the three phases of the Paleolithic: lower Paleolithic, middle Paleolithic, and upper Paleolithic. They were separate from each other, and how were they separate? That's all with our conclusion part. A Paleolithic end हुआ 10,000 BC में, Paleolithic era came to an end. So then you are done with your second answer like this. Now we will come to second assignment, and our second assignment starts with, we have to write 250 words each. First question is, write an essay on science and technology in ancient India. साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंशिएंट इंडिया में कैसा था. आज के समय जैसा तो नहीं था. सो इन द रेफरेंस टू एंशिएंट इंडिया यू हैव टू राइट इट. Science and technology played a critical role in the evolution of human society. Humans have had a desire to observe and understand nature since prehistoric times in order to control and manipulate nature for their own benefits and welfare. Since ancient times, India has a glorious culture of education, science and technology, and has made significant contribution in the field of astronomy, mathematics, geometry, metallurgy, and Ayurvedic system of medicine and surgery. Science and technology, its features like the Ganita is the general name for the mathematics, which included arithmetic, geometry, algebra, astronomy, astrology. Arithmetic is known by several names including Patin, Ganita, and Anka Ganita, calculations with numerals. Like this you have to write. Astronomy has made a great strides. Planetary motions became emphasized and closely monitored. क्या क्या डेवलपमेंट हुआ था मेनली आपको वो मेंशन करना है. ये केवल आपके असाइनमेंट में हेल्प नहीं करेगा. अगर ये क्वेश्चन आपका आता है एग्ज़ाम में तो दिस क्वेश्चन इज़ हेल्पफुल टू यू इन एग्ज़ाम ऑल्सो. Then you have to give a conclusion
And then we come to fourth question, describe the modern art and architecture. Modern art and architectures के बारे में हम लोगों को बताना है. पहले हम लोग आर्ट बताएंगे, फिर आर्किटेक्चर. पहले इंट्रोडक्शन देंगे. That the great modern rulers like Ashoka embraced Buddhism, and the immense Buddhist missionary activities that followed during his rule paved the way for the development of the modern sculptures and the architecture style. Kings like Ashoka patronized the charm and tradition in the 3rd century BC. The charm traditions refers to the several Indian religious movements parallel to but separate from the historic Vedic religion. It includes Jainism, Buddhism, and other such as Ajivikas and others. Like this, you have to continue writing. Just take the screenshot. I hope you are taking. Then comes pillars. अशोकन पिलर्स के बारे में आप लिख सकते हैं. ऑब्जेक्टिव क्या था? द मेन ऑब्जेक्टिव वॉज टू disseminate the Buddhist ideology and court orders in the entire modern empire. लैंग्वेज क्या था? पाली लैंग्वेज था, प्रकृति लैंग्वेज था. अरमिक लैंग्वेज भी यूज़ हुआ है कुछ ग्रीक्स के द्वारा. Architecture कैसा था? Modern pillars mainly comprises of 4 parts shaft, a long shaft formed in the bases and made up of a single pieces of stone and monoliths. Capital, on the top of shaft lay the capital, which was either lotus shaped or ball shaped. सांची स्तूपा के बारे में भी है, आप मेंशन कीजिए. एग्जाम्पल दीजिए. हिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट एग्जाम्पल है, बस आप लिख दीजिएगा तो आपको मार्क्स फेच नहीं कर पाइएगा. आपको उसमें एग्जाम्पल्स देना होगा. अगर आप लिख रहे हैं कि सोर्स में बताता है पॉलिटिकल लाइफ के बारे में, तो पॉलिटिकल लाइफ के बारे में ऐसा सोर्स बताइए. अर्थशास्त्र, निटिसर्स. तो यू हैव टू राइट द एग्जाम्पल्स. उसके बाद में आप कंक्लूजन दीजिए. दैट द मॉडर्न आर्ट वॉज डेवलप्ड अंडर द मॉडर्न एम्पायर, विच वॉज द फर्स्ट एम्पायर टू रूल मोस्ट ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट ड्यूरिंग द 4th and the 2nd century BC, and modern monarchs, notably Ashoka, embraced it as a real and art forms. The art and architecture of the modern had a significant influence in the development of the ancient Indian history. Because of the modern kingdom spanned such a large territory, its art reached great distances and gained widespread acclaims. Then let's come to the 5th question. Write a note on the growth of the principle and expansions of Buddhism in ancient India. Buddhism started in India over 2600 years ago. आप बुद्धिज़्म के बारे में, उसके प्रिंसिपल्स के बारे में लिखिए. पहले बुद्धिज़्म क्या था, कब आया, वो लिखिए. उनके रूलर्स कौन थे. बुद्धा के 2 टाइप के डिसाइपल्स थे, मॉन्क्स, भिक्षुस थे. मॉन्क्स कहाँ रहते थे, भिक्षुस कहाँ रहते थे. आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा उनके फॉलोअर्स क्या पाथ चूज़ किए, कैसे डिवीजन हुआ. एटफोल्ड पाथ्स के बारे में लिखिए. राइट व्यू, राइट इंटेंशन, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट माइंडफुलनेस, राइट एफर्ट एंड राइट कंसंट्रेशन. उसके बाद एक कंक्लूजन दीजिए. Thus the spread of Buddhism occurred during the period of Emperor Ashoka and the King Kanishka. As an Emperor Ashoka spread the teachings and the beliefs of the Buddha in India and other parts of the Asias, Kanishka used the Silk Route to spread the teachings and belief of Buddhism in the central part of Asia, which was greatly triggered by the spread of influence of Buddhism in the major part of Asia. Despite being the birthplace of Buddhism, due to many foreign invasions, the number of people who believed in Buddhism in India is now almost negligible. Almost all the remaining Buddhists who are currently living in India are located mostly in the Himalayan रीजन. मेनली जो भी इसमें बताया गया है मेनली कि जो भी बुद्धिस्ट थे उनकी इन्वेजन हुआ, उसकी वजह से वो लोग हिमालयन रीजन्स में हम लोग देखेंगे ज़्यादा बुद्धिस्ट फॉलोअर्स हैं. असाइनमेंट 3 लास्ट पे आया जिसको 100 वर्ड्स में लिखना, मीन्स 1 पेज इज़ मोर देन एनफ. गैंगटिक नॉर्थ इंडिया. फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल के बारे में लिखिए, कैसे वो जोग्राफिकली हेल्प किया इंडिया को.
I hope you have taken the screenshots. The income emergence during the second half of the 3rd millennium BC. आप अपना assignment को जितना neat बनाएगा, you will fetch more marks. Don't make it kitsch pitch. Don't scribble it. Use more colorful pens because you are now in graduation. It doesn't matter that you're using colorful pens. It matters what you have written. What matters the most. So, write. Your content should be good. Decoration you can do bit, not much. As IGNOU has already said that the answer should be from the blue pen itself. So use it. What is said? Be creative, not more creative, very much creative. You don't have to become. Content should be good. इन्हें के बस फूल बना दिया और कंटेंट है ही नहीं. फिर 9th क्वेश्चन में आते हैं इंडियन फिलॉसफी एंड इट्स इन्वॉल्वमेंट विजन के बारे में लिखना है. Indian textual tradition conceives environment as a system with life which has synchronized the complex interrelationship of numerous living and non-living entities. Even the apoetic world has been perceived as a living creatures with a soul. It is a very significant concept as it placed man as an equal to every other elements of an environment. ऐसे करके आप लिखते जाइए आगे. या तो आप स्टॉप करके वीडियो लिखते जाइए. That is also a good option. इससे होगा क्या कि आप लिखते भी जाइएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लिखिएगा नहीं तो फिर वो दिक्कत होगा. फिर आता है सप्तांग थ्योरी क्वेश्चन 10 विच इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस असाइनमेंट. अकॉर्डिंग टू कौटिल्य स्टेट हैज़ बीन एलिमेंट और कॉन्स्टिट्यूएंट नेमली द स्वामी. You can stop the video, just write the video, whatever it is written from the video. That is also one of the way you can just write the assignment. Try to write your own. So we are done with this assignment BHIC 101. हम लोग 101 कंप्लीट कर चुके हैं इसी से. तो एक काम कर सकते हैं आप, या तो आप वीडियो को स्टॉप करके लिखते जाइए. उससे क्या होगा कि आप लिखते भी जाइएगा और माइंड में रहेगा कि लिखना है, कंप्लीट करना. अगर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप स्क्रीनशॉट लेके उसको बस गैलरी में सेव कर लीजिएगा और हो सकता है कि आप उसको लिख नहीं पाएँ. सो बेटर ऑप्शन इज़ दैट यू स्टॉप वीडियो एंड write it down. So we are done with this. So next is BHIC 102. That will also be uploaded and other assignments will also be uploaded soon. Thank you everyone.